Hello all, welcome to my channel. Many times when we start our weight loss plan, we start with a lot of excitement. We start looking at the diet plan, we start looking at the exercise, and we see, man, in next 3 to 6 months, I'll achieve my goals. So we put a lot of effort. We follow the diet strictly. We also follow the exercise. Every day we start moving. And that because of that activity and everything, we see the results are happening. We see that we are losing weight and the weight is coming down on the scale. So it gives you a lot of hope. I can get my results. But then after some time, even if you're putting effort, you do everything you're following as it is, you see that nothing is happening on the scale. Then you start getting panicking. Yeah, what is going wrong? I'm putting all kind of effort I'm putting. I'm following diet as it is. I'm following the exercise as it is. Why my weight is not coming down? Then you start thinking, have I reached a plateau? And you start panicking, right? In this video, I'll talk about what is weight loss plateau and why the plateau happens. Because unless you know what is plateau and why it is happening, you'll always be confused and you'll start blaming yourself or blaming your coach and you'll not get the results. All right. So hi, this is Jagan here. I'm a mentor coach and I have lost 17 kg in 6 months without strict diet, without gym. So if you are somebody who is looking for, weight loss or belly fat loss, you're in the right place. Here you get a lot of information about how to be healthy, how to eat healthy, how to stay healthy, and how to be active and how to get in a best version. Thank you. So let's talk about what is weight loss plateau. So first thing I would like to tell you that weight loss plateau is something where weight is stuck for a long time. What I told you some time back that we are trying hard, we are putting a lot of effort and weight is not coming down, and that is point of time when you feel that we are on a plateau. And this has happened with many times with me also. When I was in my weight loss journey, when I started, it was 83 kgs, and I decided in next 6 months I have to lose around 20 kgs, so I'll be close to 60-65 kgs. So when I started my journey, what happened, first 15 days I lost around 3 kgs, 2 to 3 kgs. I was very excited. In fact, first month it was close to 4.5 kgs. But next month, my weight did not come down. I was stuck in around 78 kgs for some time. Then I had some kind of panic situation. Is my weight is going to be stuck there? Am I in a plateau? So that is what most people think. When they get into plateau, they feel that weight is stuck for a long time. So that's the thing. And second thing I would like to tell you that even the best weight loss plan also can plateau. मतलब आपने सबसे अच्छा प्लान ट्राई कर लिया जिसमें कि सबसे अच्छा कोच मिल गया आपको, अच्छा डाइट आपका ज़बरदस्त है, एक्सरसाइज भी बहुत अच्छा मिल रहा है, आप बहुत एक्टिव हो, फिर भी ये हो सकता है कि आपका वेट लॉस जो है वो मतलब plateau हो सकता है, because plateau is a part of life. I want to tell you this, don't panic. Plateau is a part of life. So, and this you have to accept, the plateau is normal. Okay, and nothing wrong with your plan or wrong with your exercise, nothing wrong with your body. It is very much normal and everybody will go through it. So please do not lose hope, because what happens, many of the clients, what happens, they start pinging, my weight is not coming down, my weight is not coming down, I'm stuck at this weight, and they start reacting very soon, within 1 month, 15 days of starting the plan. So what I tell you first thing is, do not lose hope. This is a part of life and you have to live with this. Because I'll talk about why it is happening and what to do about it. That's the part next level. But first thing you have to understand, this is something to be accepted as it is. Okay. All right. So let's talk about why this plateau is happening. Because unless you know why it is happening, you will start overreacting. And when you overreact, you do the wrong things, and which will actually aggravate the problem. Okay. So why plateau is happening? There are two type of cases plateau can happen. ओके एक टाइप का केस जो है आपका बिगनर्स लेवल, मतलब आपने प्लान स्टार्ट किया है, आपने वेट लॉस का प्लान स्टार्ट किया है, आपको प्लान मिल गया है, एक्सरसाइज प्लान सब कुछ मिल गया आपको, तो ये हो सकता है कि स्टार्टिंग लेवल में आपका प्लाटू हो गया, मतलब पहले 1 महीने में कुछ रिजल्ट आया, उसके बाद आपका प्लाटू हो गया, ये हो सकता है. सेकंड केस हैपन इज एक्सपीरियंस लेवल. दैट मीन्स, for example, I'll give an example here. Let's say you plan on a 6 months journey and the first 3 months you got some results. Okay, let's say you got 15 kg, 12 kg kind of thing, and you got results in a very systematic way, very kind of linear weight loss. Then you got stuck at some point of time. उसके बाद आपका कम ही नहीं हो रहा है, मतलब आप जो 20 kg का गोल लेके चल रहे थे वो पहले 3 महीने तो आपका 10-12 kg कम हो गया, उसके बाद आपका कम नहीं हो रहा है. इसका मतलब क्या है, आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है and you have got some results and you got stuck there. So there are two type of things. So we'll discuss what happens in the plateau at the beginner level when you're starting your journey, or somewhere in between in the course of the program, right? So let's talk about the beginners level. तो बिगनर्स लेवल में होता क्या है? सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने अभी के अभी प्लान स्टार्ट किया है वेरी रिसेंटली, इट कैन हैपन विद इन अ फर्स्ट मंथ इट सेल्फ. ओके, व्हाट हैपन्स इन बिगनर्स लेवल? तो पहले समझते हैं व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी. When you start your weight loss journey, the first thing is
you will be, see, when your body starts initially for the weight loss, it has to prepare itself, right? So what happens is initially a body will be losing glycogen, basically a carbohydrate which is there in the liver and the muscles. So when body loses glycogen, which is a carbohydrate, it actually releases a lot of water. It burns the glycogen because body has to understand, okay, there is some plan I have to follow. It will start burning the glycogen and the water will go from the body. So initially जो आपका lose होता है वो water loss होता है. That is not a fat loss. Okay, so initial first month, first 15 couple of weeks, and along with that water loss, you will also lose some muscle mass. जो muscle mass होता है वो actually आपके body का जो muscle है, and muscle is something which actually burns more calorie than fat. जब मसल आपका थोड़ा बर्न होता है स्टार्टिंग में, तो उससे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जो आपका है वो स्लो हो जाता है. इट डिक्लाइंस द मेटाबॉलिज्म. वंस द मेटाबॉलिज्म स्लोज डाउन, व्हाट हैपेंस इज, अब वही प्लान आप फॉलो कर रहे थे, पहले 1 महीने में आपका रिजल्ट आ गया, उसके बाद आपका स्टक क्यों हो गया? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है. उसकी वजह से सेम प्लान विल नॉट वर्क फॉर यू राइट नाउ, बिकॉज योर बॉडी राइट नाउ इज नॉट कंज्यूमिंग दैट मच ऑफ एनर्जी दैट एफिशिएंटली विच यू यूज्ड टू डू बिफोर. एंड आपको लगता है कि आप प्लाटो में आ चुके हो, राइट? सो दैट इज व्हाट हैपन इफ यू आर अ बिगनर लेवल. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हैपन्स वेरी फास्ट, फर्स्ट 1 month ऑफ द होल थिंग. सो ग्लाइकोजन लॉस हो गया, मसल लॉस हो गया, देन आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया. मेटाबॉलिज्म स्लो होने से आपका कैलोरी बर्न जो है, मतलब इट विल स्लो डाउन. whatever the same effort will not give you that much of output. तो इसकी वजह से आपका प्लाटू हो जाएगा, आपका वेट उतना कम नहीं होगा, जबकि आप एफर्ट डाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर भी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है. ठीक है. दूसरा जो है आपका एक्सपीरियंस लेवल, मतलब क्या बोल रहा हूँ, इन दैट केस जैसे आपने 2-3 महीने ट्राई कर लिया, आपका रिजल्ट कुछ आ चुका है, आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा है, मेरे को 10-12 kg कम हो गया, अभी आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है और वहाँ पे आपका प्लाटू हो सकता है. नाउ इन दैट केस द ग्लाइकोजन थिंग विल नॉट कम इनटू पिक्चर, क्योंकि ये तो पहले हो जाता है, ये बाद में नहीं होता है. तो इसमें एक्सपीरियंस लेवल में आपको क्या होगा, इन दैट केस यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज ए साइंस, we call it when you go for a weight loss, what is happening, you understand one thing, it is a conflict between the mind and body. Okay, so we have something like a I can tell you, it is like a set point. Set point क्या होता है, your body has certain set point, your mind is ready, your mind wants to get a flat belly or a good body, dream body, right? Your mind is ready, it has ready to put effort, सब कुछ करना चाहता है, आपका दिमाग जो है सब कुछ करना चाहता है, but अब body जो है it doesn't support, because body always wants to, it always resists any kind of change. So whenever your mind is telling I want to lose weight, your body wants to maintain the weight. And why it happens, there's a different theory, I'll talk in a separate topic, that is known as the set theory. As part of the set theory, the body will not adapt well to the direction of the mind. ठीक है. तो इससे क्या होता है, I'll just tell you what happens with this. So whenever there's a conflict between mind and body, the first thing what happens, two things majorly happen. आपको बॉडी, जो आप कोई भी डाइट फॉलो करते हो, सपोज आपने अपने डाइट प्लान कुछ ले लिया है, राइट, एंड यू हैव ऑलरेडी कपल ऑफ मंथ्स इन द होल प्लान, ऑलरेडी आपने लूज़ किया है, तो आपके बॉडी को क्या लगता है कि आपने, यू आर नाउ इनटू, लेट्स से गोइंग फॉर नेक्स्ट लेवल थिंग, राइट, नेक्स्ट 10 kg लॉस, व्हाटएवर, योर बॉडी स्टार्ट थिंकिंग दैट यू आर स्टार्विंग, दो यू आर नॉट स्टार्विंग, यू आर गेटिंग द बेस्ट डाइट, योर बेस्ट एक्सरसाइज, सब कुछ ठीक चल रहा है, आपका प्लान जो है ज़बरदस्त है, and there is no starving at all, सब कुछ अच्छा मिल गया आपको, but what body thinks that you have to go on a diet, or you are going to starve, or you have to stop eating the general things, so it feels like something is going wrong. Okay, your body will think I'm starving, then what the body will do, it will resist that change. ये आपको बोलेगा कि नहीं, हमें चेंज नहीं करनी है, राइट? तो बॉडी व्हाट विल डू, इट विल ट्राई टू ब्रिंग यू टू द सेट पॉइंट. दैट मीन्स जो आप कर रहे हो, वट एवर एफर्ट यू आर पुटिंग, इट विल ट्राई टू रेजिस्ट दैट चेंज, इट विल नॉट अलाउ यू टू लूज द वेट. दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन पीपल फॉर दे ट्राई लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे माइट हैव सीन दैट इवन इफ यू डू दैट, द बॉडी इज काउंटर एक्टिंग टू इट. And there are lot of things like, there are certain hormones are there in the body. जैसे कि आपका होता है hunger hormones. What is hunger hormones? जैसे आपका ghrelin है, leptin है, there are different hormones. तो how the body will show the resistance to change, it will actually regulate the hormones. For example, ghrelin जो है, जो which will make you feel more hungry, and there's another is leptin which will make you full. तो it will start releasing more ghrelin. That means आपका जो hunger hormone है वो बढ़ जाएगा, और आपका जो द अदर हार्मोन विच इज लेप्टिन, इट विल स्टार्ट रिलीजिंग लेस लेप्टिन. मतलब आपको फुलनेस कम होगी, भूख ज़्यादा लगेगी. इसका मतलब क्या है, आपको लगेगा कि मैं खाना तो नहीं खा रहा हूँ, प्लान तो मेरे को मिल गया, पर मेरे को भूख और भी लग रही है. एंड दैट इज वाई व्हाट हैपेंस इज बॉडी विल, यू विल टेंड टू ईट मोर. So that kind of tendency will happen. In that case, what will happen? You will not lose weight. Your body is resisting the new changes what you are making right now.
ठीक है. तो ये है आपका जो है द मेजर चेंज व्हाट हैपेंस हियर इज इफ आई टेल यू the body will resist the changes because it will feel that you are starving, and starving is something body doesn't want to go for because it doesn't want to get into a situation where to any kind of change which is happening within you. Second thing what happens is आपकी जो बॉडी है ना बहुत ही इज़ वेरी वेरी स्मार्ट. इट्स लाइक जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन है. मोबाइल में क्या होता है कि जो आपने बैटरी जो है चार्ज आपका 20% आ गया तो क्या होता है बॉडी ऑप्टिमाइज मतलब मोबाइल फोन ऑप्टिमाइजेस राइट. इट डजंट अलाउ यू टू रन ऑल द ऐप्स. कुछ ऐप्स को बंद कर देता है, कुछ ऐप को वो इट बिकम्स ए लो पावर मोड, ऐसे हो जाता है. सेम थिंग हैपन्स जब आपने कोई प्लान फॉलो कर रहे हो जो आपका वेट उसमें क्या होगा कि आपको बॉडी को लग जाएगा कि यार आप जो है अभी क्या कर रहे हो, यू आर मेकिंग सम चेंजेस इन योर लाइफ. सो व्हाट इट विल डू एसेंशियल इज इट विल नॉट अलाउ, इट विल बी वेरी एफिशिएंट राइट. इट विल अडेप्ट टू द चेंजेस. जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे आपने वर्कआउट किया, आपने ट्रेडमिल में दौड़े कुछ किए या तो कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर दिया जो कि टिपिकली 200-300 कैलोरी बर्न होता है. तो बॉडी विल बी सो एफिशिएंट इन कंज्यूमिंग दैट एनर्जी लाइक ए मोबाइल फोन और 20% बैटरी. तो आपका वो 300 कैलोरी बर्न नहीं होगा, वो आपका 200 कैलोरी हो जाएगा. एंड इट विल हैपन ऑटोमेटिकली बिकॉज बॉडी विल ट्राई टू use the energy sources such a smart way, smart utilizing the power so that you will not be knowing कि आपका उतना एनर्जी कंजप्शन हुआ ही नहीं. और इसकी वजह से क्या होता है द व्हेन बॉडी बिकम स्मार्ट इन कंज्यूमिंग द एनर्जी तो उसका आउटपुट उतना नहीं आएगा जो आप पहले आता था right. So that is why your body the scale will not show any difference right. So that is what you have to understand ki your body is much smarter than what you think, and it always will change based on the situation. That means if you feel that there is some changes happening, it will be more efficient, more smart, so that even if you do the same work it will adapt fast to the changes. उसकी वजह से क्या होगा, आपका उतना एनर्जी कंजप्शन होगा ही नहीं, उसकी वजह से आपका उतना रिजल्ट नहीं आएगा जो पहले आपका आ रहा था. तो ये चीज़ जो है आपका वेट लॉस प्लेटू हो जाता है. एंड आई टेल यू वन थिंग, दिस इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ लाइफ. जो मेरे साथ हुआ है सबके साथ हुआ है, और हमें इस चीज़ को कैसे काउंटरेट करना है हम अगले वीडियो में बताएंगे. एंड आई वांट टू नो फ्रॉम यू व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ नोइंग अबाउट weight loss plateau and why it is happening, and are you right now able to understand that this is happening for a real cause which is that is how programmed, and that is how we need to accept, because the time you accept the changes in your life that is why you will be able to get better results. क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग ब्लेम करने लगते हैं, we start blaming things, we start getting to self critical mode, we start telling things that this is not right, we become a victim mindset. हम खुद को ब्लेम करते हैं, अपने कोच को ब्लेम करते हैं और सोचते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो यार प्लान में गड़बड़ है, या तो there's something wrong with my body. So what happens is not about the plateau which actually creates problems, it is the after effect of the plateau. उसके बाद आपके साथ जो आपके react करते हो, तो आप how do you react to your problems, right? And that is how you respond to the problems. That is how decides that whether you'll be losing or not. कि बहुत लोग हैं प्लाटो के बाद ब्रेक भी करते हैं, कुछ लोग प्लाटो के बाद ब्रेक नहीं कर पाते. ओनली रीजन इज some people respond well and some people don't respond well. तो अगले वीडियो में बात करेंगे कि how exactly you can come over those problems, और मैं आपको सीक्रेट भी बताने वाला हूँ जिससे आप प्लाटो ब्रेक कर सकते हो. ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए कि व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो एंड व्हाट एक्जैक्टली, इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज टाइप इन द कमेंट चैट बॉक्स and I will answer in the next video. Thanks a lot for watching. See you again.